वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आवर चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वी हैव इनहेरिटेड आवर वर्ल्ड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स व्हेन वी आर ओनली बोरोइंग इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन एंड देयर हेल्थ एंड वेलबीइंग मस्ट बी आवर नंबर वन प्रायोरिटी। कहा जाता है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी अगर हम देखते हैं तो मदर एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत हाई है। बच्चे की ज़िंदगी के पहले 100 दिन बहुत अहम होते हैं और इस मोर्टेलिटी को नीचे लाया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है अगर मुल्क में बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज और ख़ुसूसी तौर पे बच्चों के लिए इमरजेंसी सर्विसेज मुहैया की जाएँ। इसी हवाले से हम देखते हैं कि पिछले 12 साल से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन कोशा हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के 30 अजला, बलूचिस्तान के 33 अजला, इस्लामाबाद और लाहौर में माशाल्लाह से हर हस्पताल में चाइल्ड लाइफ के तवस्सुत से 24/7 बच्चों के लिए इमरजेंसी सर्विसेज मुहैया की जाती हैं। लेकिन आज आपको बताते चलें एक और गुड न्यूज़, क्योंकि वो पार्टनर करने वाले हैं, यानी चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन पार्टनर कर रही है विद वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स इन इटली नोन एज द गैजलिनी हॉस्पिटल, और इसके तवस्सुत से अगले 1 साल में 500 से ज़ायद डॉक्टर्स को पाकिस्तान में ट्रेन किया जाएगा। बहुत ही अहम कोलैबोरेशंस होंगी टेलीमेडिसिन के लिए। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कॉन्सुलेट ऑफ इटली के एंड यकीनन द गवर्नमेंट ऑफ इटली के, क्योंकि ये इनकी रवा साल में फ्लड रिलीफ के हवाले से जो एफर्ट्स रही हैं उसका एक हिस्सा है। सो यू वाचिंग दिस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन हियर ऑन आज पाकिस्तान, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई वंडरफुल पैनल टू यू। वी आर वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू हैव विद अस हिज एक्सेलेंसी Danilo Giurdanella, who is the Consul General of Italy to Karachi. Thank you very much for being here. Thank you for having me. With you we have Dr. Andrea Moscatelli, who is from the Gazzelini Hospital in Italy, specially here for this partnership. Thank you, Dr. Andrea, for being here. And last but definitely not the least, we have the founding trustee of ChildLife Foundation, Mr. Sohail Tabba. सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। गुफ्तगू उर्दू में सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ। आज बड़ा अहम दिन है और 1 साल के लिए जो हदफ बनाया गया है कि 500 और डॉक्टर्स को ट्रेन करेगा गज़लिनी हस्पताल की शराकत के साथ। इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान के लिए और चाइल्ड लाइफ के लिए और चाइल्ड लाइफ में जितने भी बच्चे ट्रीट होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अहम दिन है कि ये एक ओकेजन ऐसा आया है कि जिसमें हम पहली दफ़ा एक यूरोपियन हॉस्पिटल के साथ पार्टनरशिप में जा रहे हैं। और ये पार्टनरशिप कोई फाइनेंशियल टाइप की नहीं है, इट्स मोर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। और वो हमारे डॉक्टर्स को ट्रेन करेंगे, हमारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेंगे और जितने भी एरियाज़ में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज़ मेडिकल साइंस तरक्की करती जा रही है, तो जो एरिया में हमारी कई खामियां रह गई हैं तो वो इंशाल्लाह वो हम लोग उसको पूरा करने के लिए उम्मीद करते हैं कि गज़लिनी की वजह से बच्चों की ज़िंदगियों में और बेहतरी आएगी और मज़ीद ज़िंदगियाँ बच सकेंगी। Absolutely, poorest of the poor will be served. These are the underserved communities in Pakistan. Your Excellency, this is of course Italy's continued commitment to improving the healthcare systems in Pakistan. But how did this partnership come along? How did ChildLife Foundation meet with Gazzelini? I'm sure your office, your kind office, has been doing the magic. Yes. Well, first of all, thank you for raising such an important topic of, such as healthcare in Pakistan. So first of all, I would like to say healthcare, it's a very, very important issue in Italy. And we see things in a very particular perspective, because in Italy we have universal healthcare. And Italy has been consistently ranked as among the first countries in the world for equality of access to healthcare. So for us, culturally, it's very important that everybody has equal access to healthcare. And this is particularly important if we're talking about children healthcare. So I think we can all agree, everybody all over the world, that children deserve the maximum level of healthcare possible. And this is something that childcare is trying to do, and this starts from my personal friendship with Sohail, whom I would like to thank, and is the man behind this project, and also from the long-standing commitment of Gazzelini Hospital, which is one of Italy's leading hospital in Pakistan. So tomorrow we're going to sign this very important MOU that will allow the training of 500 doctors and important development in the field of telemedicine. But this is also very important for us, and is also for scientific research in
in Italy. So it's a partnership. Absolutely, and this partnership will go a long way in raising the sophistication of the procedures, because when it comes to saving lives, time is of essence. Dr. Andrea, is this your first visit to Pakistan? Yes, actually it's the first time that I come in Pakistan, and it was impressive to visit the ChildLife headquarters, because they had a very effective technology, and they built a hub and spoke model which is extremely advanced. They can reach very remote areas and provide consultation and advice to doctors there. So I think this partnership is of mutual interest, because Gazlini has a huge commitment in telemedicine. We are now here I'm with Dr. Ubaldo Rosati, who comes from the board of directors, and we are representing our CEO, Dr. Botti, who wants to improve telemedicine also in Italy. And our collaboration will be focused in the training of doctors in order to put in place some intervention which might make more and more effective what they are doing in terms of clinical support. Right. Dr. Andrea, when we look at the WHO reports, after the floods, about 3.4 million children are at risk right now. They have lost everything, they've lost their homes, they're living in tent cities, and of course, they're at the risk of contracting any of these vulnerable diseases which are around them. ChildLife Foundation is doing a great job. They already have an infrastructure in the districts that are worse hit by the floods. What, in your opinion, can more be done? What more needs to be added to their capacity? I think that they are reaching all the remote area, and they are planning to expand in the next future. I think that what we can do, it is not working on their telemedicine system, which is a very high standard. We can try to find together simple solutions to big problems. Sometimes just choosing a protocol of treatment which is simple and applicable in a reality like Pakistan could save a lot of lives. So we should focus together in finding those pathways of treatment which might be very simple and very effective. And I think जिस तरह हम अभी भी बात करते हैं सोहेल साहब, अगर डायरिया का, डिसेंट्री का खदशा है तो उसके अंदर बच्चे को रिहाइड्रेटेड रखना है। इन्होंने भी वही बात की कि सिंपल सॉल्यूशंस की तरफ आप जाएं। चाइल्ड लाइफ के पास एक बड़ी बेहतरीन चीज़ ये थी कि आप ऑलरेडी उन अजला में मौजूद थे जो सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त हालात आपको न्यूज़ कवरेज से पता ही चल जाता है कि लोग बड़ा सीरियस प्रॉब्लम में हैं। काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। खाने पीने की अशिया, दवाइयाँ और गैस्ट्रो की वबा फैली हुई है। तो आइडियली तो गवर्नमेंट के साथ हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, बट इन दिस मीन टाइम हमारी टीम्स निकल गई हैं और वो पेरेंट्स को ट्रेन कर रही हैं, माँ बाप को ट्रेन कर रही हैं कि अपने बच्चों को गैस्ट्रो से कैसे बचाया जाए। इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन, हमारे पास जितनी गवर्नमेंट की मेडिसिन आती हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन से कैंप्स में, टेंट्स में, हॉस्पिटल्स में, ईआर में जगह जगह जाके बच्चों को मेडिसिन फराहम की जा रही हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है जी। इनफैक्ट आप आई एम श्योर यू नो द नंबर के जब चाइल्ड लाइफ फॉर्म हुआ था तो इंतहाई बीमार बच्चों की सर्वाइवल जो थी वो दैट वाज ओनली 15% थी। सही। और आज वही चीज़ 97% है, और वो 97% का मतलब ये है कि ये हर चीज़ ये रिफ्लेक्ट करती है कि किस टाइप की मेडिकेशन और किस टाइप की फाइनेंशियल एड आप ऑन टाइम ऑन द स्पॉट बच्चों को दे सकते हैं। सोहेल साहब, इसको अगर हम मज़ीद प्रोब करते हैं तो क्या इसमें इंतहाई निगहदाश्त के कितने आपको पेशेंट्स लगते हैं, या इसमें मसला ये होता है कि फ़ौरी तौर पे इनको फ़र्स्ट एड दी जानी चाहिए, मेडिकल अटेंशन मिल जाए तो कई प्रॉब्लम्स को अवर्ट किया जा सकता है, या जो अभी आपने पार्टनरशिप कॉज की जिसमें 500 मज़ीद डॉक्टर्स ट्रेन होंगे, क्या उसमें सर्जिकल इंटरवेंशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, क्या उसमें ट्रेनिंग की जाएगी? फोकस क्या होगा इस साल की पार्टनरशिप का? देखिए, चाइल्ड लाइफ का जो मेन फोकस है वो ईआर है। इमरजेंसी रिस्पांस मींस कि यू आर ऑन द टोज। आपको उसी वक्त उसी मौके पे बच्चे की जान बचानी है, बच्चे को किसी मोहलिक बीमारी में मज़ीद मुब्तला होने से बचाना है।
तो हमारा जो फोकस है वो इमरजेंसी है, सर्जिकल जो होता है, जो जिन बच्चों को एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर हम ऑन टाइम ये चीज़ें अगर बचा लें तो सर्जिकल की या एक क्रॉनिक डिजीज़ डेवलप करने से आप बचा सकते हैं। बिल्कुल सही। वो हमारी कोशिश यही होती है कि जितने भी बच्चे हमारे स्टाफ है वो ट्रेंड होते हैं। इनफैक्ट जो बहुत ही जूनियर स्टाफ होता है उसको पता है कि फ़र्स्ट एड में किस तरह रिस्पॉन्स करना है। हमारे यहाँ मेरिट ऑर्डर है कि अगर किसी बच्चे को खांसी, ज़ुकाम या नज़ला है तो उसको भी देखा जाता है, लेकिन इमरजेंसी में कोई बच्चा आता है जिसको डायरिया है या बहुत ज़्यादा बीमार है तो वो फर्स्ट कम उसको देखा जाता है। तो इस तरह दैट्स हाउ ये स्ट्रक्चर बनता है। Your Excellency, what would be your message to the people of Pakistan? This is a very important partnership coming through, and I believe both the ChildLife Foundation and the Ghazalini could have a very productive collaboration when it comes to telemedicine. Why is telemedicine so important for the years to come? Well, telemedicine is extremely important for Pakistan, especially because Pakistan has a very big population that is dispersed. So ChildLife telemedicine networks is able to reach in areas which are very distant and underpopulated, such as in Balochistan, for instance. So it's very important, but it's very important also for us in Italy because it allows for people who live in rural areas, in remote areas, in underpopulated area to have the best medical treatment. And this is what I'm talking about, the right for everybody. This should be enshrined in international law, the right to everybody to have, especially for children, to have the best medical treatment possible. Absolutely. And my last question to you would be both, the entire world through the horrors of the pandemic, what are some of the learnings? How can we make our healthcare systems more universal and more equitable, like you said? Well, the pandemic has been a very big challenge to Italy. In fact, also must thank Ghazalini because for them also you were under stress. All the whole Italian healthcare system was extremely distressed. Yes, distressed because of this, and because of as I told you, in our legal culture we have equality of access to healthcare. So it was very difficult for us to manage. We have to be honest. I think that one point that we must make it clear is that we have to be prepared. Healthcare professionals must be trained. We need more healthcare professionals. We need more resources, public resources for healthcare. We must not underestimate this. This is the most important lesson I think we have drawn in Italy. What we have learned by the pandemic is that ICU beds capability is a problem. So putting in place interventions in the emergency department that can prevent people to be admitted to the ICU is a major challenge, and it is something that we are trying to address with this collaboration with ChildLife, because the same holds true for children. We have a limited number of ICU beds, and that's what we are trying. So rather than distressing the system, whatever can be handled at home, telemedicine can help in that. Absolutely. Prevention is always better than cure. So if you catch it at a very early stage, you can avert many medical emergencies. Dr. Andrea, we welcome you to Pakistan, and we hope that this collaboration that has been put together very kindly by the Consulate of Italy to Karachi and of course the ChildLife Foundation will prove to be a major milestone for the years to come. So thank you, gentlemen, for being here. We are going to now take a short break. We'll be right back.